वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट डेफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। सो बिफोर स्टार्टिंग कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट सोल्यूशन सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक सोल्यूशन क्या होता है? जब हम एक सॉल्वेंट लेते हैं और सोल्यूट लेते हैं तो हमें एक मिक्सचर मिल जाता है जिसे हम सोल्यूशन कहते हैं। सो बेसिकली वी कैन से सोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अब ये सब्सटेंसेस क्या होते हैं? या तो ये सॉल्वेंट हो सकता है या सोल्यूट हो सकता है। इन दोनों को मिला के हमें एक सोल्यूशन मिलता है। सो सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट जो है बेसिकली वी कैन से सोल्यूट इज ए सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इन ए सॉल्वेंट। सोल्यूट जो है सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस इन विच द सोल्यूट डिजॉल्व्स। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट सो दैट वी विल अंडरस्टैंड। सॉल्वेंट की अगर हम बात करें हम वाटर ले सकते हैं, तो सोल्यूट की अगर हम बात करें हम साल्ट ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं, जिससे हमें एक सोल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट टर्म अब हमें इसमें आती है स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? वो सॉल्यूशंस जिनकी कंसंट्रेशन हमें पता हो, सॉल्यूशंस ऑफ नोन कंसंट्रेशन। वी कैन डिफाइन इट एज a known mass of solute is dissolved to make a specific volume. It is prepared by using standard substance such as primary standard. Now coming to the next term, that is concentration. So concentration को हम define कर सकते हैं as the amount of a substance in a definite space, or we can say the ratio of solute in a solution to either solvent or total solution. Concentration is expressed as mass per unit volume. Now, in all the techniques of quantitative analysis, we say that the use of solutions requires some basis for expression of solution concentration, which can be as percentage concentration, parts per million, parts per billion, molarity, normality, molality, formality. अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट हम इसमें बात करते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन की। सो परसेंटेज कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर 100 parts of the solution, or we can say parts per 100. It can be expressed by any of the following four methods. First, percent W by W, which is equal to the mass of solute upon mass of solution multiplied by 100. Second, percent V by V, that is volume by volume, which is equal to the volume of solute upon volume of solution multiplied by 100. थर्ड इसमें हमें आता है परसेंट W by V, that is weight by volume, which is equal to the mass of solute upon volume of solution multiplied by 100. लास्ट हमें इसमें आता है परसेंट V by W, which is equal to the volume of solute upon mass of solution multiplied by 100. Now second इसमें हमें आता है parts per million, which can be defined as the ratio of substance to 1 million parts of a total mixture or sample, which can be expressed as ppm is called mass of solute upon mass of solution multiplied by 10 raised power 6. On the other hand, if we will talk about parts per billion, there we say parts per billion is equal to the mass of solute upon mass of solution multiplied by 10 raised power 9. अब हम बात करेंगे about the fourth part, that is molarity. Molarity can be defined as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. It is also known as molar concentration and is represented by the letter M. It can be expressed by number of moles of solute upon 1 liter of solution. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी में हम क्या कहते हैं कि अगर हम सपोज ले लें NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड,
जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 40। तो हम कहते हैं दैट वन वन मोलरिटी यानी 1 m इज इक्वल टू 40 मिलीग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अगर हम बात करें 0.1 m की, दैट इज़ 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अगर हम बात करें 0.0 m की, that is 0.4 gram of NaOH is dissolved in 1 liter of water. Now coming to the fifth part, that is normality, which can be expressed as here. Normality is equal to the number of gram equivalents of solute by volume of solution in liter. Gram equivalent is equal to number of gram equivalent of solute is equal to mass of solute upon equivalent mass. Equivalent mass is expressed as molar mass by basicity. Normality is represented by letter N, and here let's take an example of normality. 1N is equal to 40 grams of sodium hydroxide dissolved in 1 liter of water. If we'll talk about zero point 0.1 normality, so 4 grams of sodium hydroxide should be dissolved in 1 liter of water. If we talk about 0.01 normality, for 0.4 grams of sodium hydroxide should be dissolved in 1 liter of water. Now coming to the molality, it can be defined as the ratio of moles of solute to the mass of solvent measured in kilograms. It is denoted by the letter small m and can be given here: moles of solute upon mass of solvent in kg, that's kilogram. Now coming to the last, that is formality. Formality can be defined as the gram formula mass present per liter of a solution. It is represented by letter F and is given here: number of formula of weight of solute upon volume of solution in liters. In formality, if a solute's formula mass equals its molar mass, formality equals molarity.